Hello and welcome to News 9 Live. My name is Brijesh Pandey. Prime Minister Narendra Modi, in a surprise announcement, declared that he has started to follow stringent Yum Niyam 11 days before the Pran Pratishtha ceremony in Ayodhya on the 22nd of January. So what is Yum Niyam and why did the Prime Minister announce it? More so, the BJP also intends to mobilize people after Pran Pratishtha. So while the opposition continues to crib and boycott Pran Pratishtha, it's clear that the BJP and RSS will convert Ayodhya into a national festival. Let's listen into the Prime Minister's 2-minute clip of the Prime Minister's or 10-minute long audio clip, and then we will go to our guests, Mr. Anil K. Verma, Kartik Chopra, Vinod Bansal and Deshratan Nigam, to analyze what exactly is this Yum Niyam and how is it going to pan out as we approach to the Pran Pratishtha of Ayodhya temple. हर किसी को इंतजार है 22 जनवरी का, उस ऐतिहासिक पवित्र पल का। और अब अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में केवल 11 दिन ही बचे हैं। मेरा सौभाग्य है कि मुझे भी इस पुण्य अवसर का साक्षी बनने का अवसर मिल रहा है। ये मेरे लिए कल्पनातीत अनुभूतियों का समय है। मैं भावुक हूँ, भाव विह्वल हूँ। मैं पहली बार जीवन में इस तरह के मनोभाव से गुजर रहा हूँ। मैं एक अलग ही भाव भक्ति की अनुभूति कर रहा हूँ। मेरे अंतर मन की ये भाव यात्रा मेरे लिए अभिव्यक्ति का नहीं, अनुभूति का अवसर है। चाहते हुए भी मैं इसकी गहनता, व्यापकता और तीव्रता को शब्दों में बांध नहीं पा रहा हूँ। आप भी भली भांति मेरी स्थिति समझ सकते हैं। जिस स्वप्न को अनेकों पीढ़ियों ने वर्षों तक एक संकल्प की तरह अपने हृदय में जिया, मुझे उसकी सिद्धि के समय उपस्थित होने का सौभाग्य मिला है। प्रभु ने मुझे सभी भारतवासियों का प्रतिनिधित्व करने का निमित्त बनाया है। निमित्त मात्रम भव सव्य साचिन, ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जैसा हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है, हमें ईश्वर के यज्ञ के लिए, आराधना के लिए स्वयं में भी दैवीय चेतना जागृत करनी होती है। इसके लिए शास्त्रों में व्रत और कठोर नियम बताए गए हैं, जिन्हें प्राण प्रतिष्ठा से पहले पालन करना होता है। इसलिए आध्यात्मिक यात्रा की कुछ तपस्वी आत्माओं और महापुरुषों से मुझे जो मार्गदर्शन मिला, उन्होंने जो यम नियम सुझाए हैं, उसके अनुसार मैं आज से 11 दिन का विशेष अनुष्ठान आरंभ कर रहा हूं। इस पवित्र अवसर पर मैं परमात्मा के श्री चरणों में प्रार्थना करता हूं, ऋषियों, मुनियों, तपस्वियों का पुण्य स्मरण करता हूं और जनता जनार्दन जो ईश्वर का रूप है, उनसे प्रार्थना करता हूं कि आप मुझे आशीर्वाद दें, ताकि मन से, वचन से, कर्म से मेरी तरफ से कोई कमी ना रहे। This was Prime Minister Narendra Modi, who started the day with a 10-minute long audio clip of his as how he intends to follow the rules of Yum Niyam and how he intends to behave in a particular fashion before he goes for Pran Pratishtha. I'm joined by Anil K. Verma, who is a political analyst, Kartik Chopra, who is a spokesperson for Nirmohi Akhada,
Vinod Bansal, national spokesperson, Vishwa Hindu Parishad, and Desh Ratan Nigam, political analyst. First, I'll go to Mr. Verma. Mr. Verma, can you please explain to our viewers about this Yum Niyam, which Prime Minister Narendra Modi made a mention of? What exactly is this Yum Niyam? And why is it important to observe Yum Niyam before the Prime Minister goes for Pran Pratishtha of Ayodhya? Yeah, Brijesh, Yam Niyam is some sort of disciplining your own self, not only your body but also your mind. There are 5 karmendris and 5 gyanendris and 1 man. So 11 is a very important number in this spiritual life. And therefore, Prime Minister has chosen this day because only 11 days are left for Pran Pratishtha. And in 11 days, the kind of control that he will exercise over his mind and over his body, or try to exercise control over mind and body, and be a peaceful person so that he can be a befitting person to be judgment at the Pran Pratishtha ceremony. So it's basically disciplining yourself, not only your body. Many people have control over body, but what about your indriyas? So that indriya and your man is the most chanchal thing in your entire, existence. So controlling that, you can think of in a second, you can travel thousands of miles away. So all that has to be magnetically brought to a center stage in yourself within, so that externally and internally there is a balance, and you are absolutely, a calm and quiet person, so that when the Pran Pratishtha happens, you are absolutely cut off from the worldly affairs and just concentrating on that particular moment. This is basically a disciplining act of yourself and your mind and body. Mr. Verma, you very beautifully put out what exactly is the Yum Niyam, but I just want to understand, why, for the benefit of viewers, why is it like that, that the Indriya, the mind, the body, everything has to be sink in for a pious purpose? What exactly does it entail before the start of Pran Pratishtha, and why is it imperative for the person who is doing the Pran Pratishtha to follow this rule for 11 days? It is basically, a prescription in the spiritual world, actually. And most of us are doing at home our pujas. But when we are doing pujas, do we really understand that our mind is not, traveling to so many other things, material things and the worldly things, and we are traveling to this problem, that problem. So basically, this entire spiritual business is to cut off yourself from those anxieties, because the Prime Minister happens to be a person who has hundreds and thousands and millions of problems, True. Local problems, national problem, global problem. We cannot imagine the magnitude of problems which the Prime Minister must be facing. We very easily say PM hasn't done this, PM hasn't done that. But it's very difficult for us to control and our domestic issues. So a person controlling the whole nation is possessed of several problems, and if his mind is not calm and quiet, then the Pran Pratishtha, that will be not you can say a correct thing for him to do. And therefore, to reduce his anxieties, to cut off from the worldly problems and the global problems and the political problems, then he is trying to calm down himself so that he can concentrate on that particular moment and be with Lord Ram and be as close to Lord Ram, because it's a Pran Pratishtha, the Murti which is there. It's supposed that Lord Ram will come live over there. So when you are bringing Lord Ram and his soul in such a small statue, then you have to be a pious person. You have to be a person who is, befitting to that occasion. So that's the Prime Minister has decided to go for Yum Niyam and 11 days fast. That's very beautifully articulated, Mr. Verma. I'll go to Mr. Kartik Chopra, who is a spokesperson for Nirmohi Akhada. Kartik ji, how do you explain, what the Prime Minister said today? Because, Mr. Verma very beautifully illustrated as to what exactly the Yum Niyam entails of, and how the mind, body, indriya, the anxiety all has to be quelled, so that the person who is performing the Prana Pratishtha is in sync with what you call the avahan of the soul of the God. How do you see this announcement of Prime Minister today morning?
See, our Honorable Prime Minister is a devout Sanatani and we are very, very proud of him. But Bhagwan Sri Ram is our Isht Dev and for us, our God of gods. And we are very happy that since he has decided to undertake this activity, he is following all necessary spiritual and religious practices that are required before performing such a activity. We have one thing that we would like to state, which the Akhada, which has fought for over 491 years to liberate the Ram Janambhoomi and has protected the idols which were always on the site, the very idols that were moved of Ram Lalla from the Chabutra inside the disputed structure, which were referred to as Ram Lalla Virajman in the Supreme Court judgment. These holy idols, which are already Pran Pratishtha, are currently in the temple adjoining the new temple. And we request that these ancient idols be also installed in the Garbhagriha, as these are already Pran Pratishtha idols, which have been prayed to, जिनकी पूजा अर्चना आरती भोग सदियों से चले आ रही है जी। और कभी भी नहीं रुकी है, तो उनको जरूर विराजमान किया जाए। प्रधानमंत्री एक नए मूर्ति श्री राम लल्ला का प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं, वो बहुत अच्छी बात है, पर पुरानी मूर्तियों को भी विराजमान किया जाए जैसे कि होना है, जैसे कि कहा गया था। जी, ओके। विनोद बंसल जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपका न्यूज़ लाइव में स्वागत है। विनोद जी, मैं समझना चाहूँगा कि आज प्रधानमंत्री ने दिन की शुरुआत की 10 मिनट के ऑडियो क्लिप में, जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे वो तमाम नियमों का पालन करेंगे जिससे आत्मा की, शरीर की, मन की शुद्धि हो, और जब वो प्राण प्रतिष्ठा करने जाएं तो एक तरह से यदि आप मेटाफोरिकल टर्म यूज़ करें तो वो भगवान के साथ या दैवी शक्ति के साथ उनका एकाकार हो, और तब वो भगवान का आवाहन करें और रामलला की मूर्ति सजीव हो और प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हो। उसके बाद प्रधानमंत्री नासिक में गए और वहाँ पर भी उन्होंने मंदिर में पूजा अर्चना की। कितना महत्वपूर्ण है आपकी नज़रों में आज जो प्रधानमंत्री ने कहा, और उसका मायने क्या है? क्या क्योंकि जब भी हम रामलला की बात करते हैं या राम जन्मभूमि की बात करते हैं, हम राजनीति को उससे विच्छेद नहीं कर पाते, क्योंकि राजनीति और इसका वो सिक्के के दो पहलू की तरह चले आ रहे हैं। तो आप प्रधानमंत्री का जो आज बोला है उसको कैसे देखते हैं? देखिए, ये वो प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने सदियों के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। ये वो प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने धर्म की पुनर्स्थापना के लिए अपना पूरा जीवन लगा दिया। ये वो प्रधानमंत्री हैं जो कि यम नियम, योग, ध्यान, प्राणायाम और अनुशासन पर जीने वाले व्यक्ति हैं। ये वो प्रधानमंत्री हैं, हमें पता है कि जिनकी प्रतिष्ठा के कारण, जिनके प्रयास के कारण हमारा जो योग जो है संपूर्ण विश्व के अंदर फैल गया। वो जो लोग सेकुलरिज्म के नाम पर इससे दूरी बना के रखते थे, आज वो सब कुछ सबको एक्सेप्टेबल हो गया। आप देखिए कि ये जो यम नियम और ये जो अपना परिपाटी परंपरा जो अपने सेलिब्रेशन के लिए कह लीजिए या उसको शुद्धिकरण के लिए कह लीजिए या भगवान के साथ अटैच करने के लिए कह लीजिए, वो सारी की सारी चीजें न सिर्फ प्रधानमंत्री बल्कि देशवासी भी अपनी अपनी तैयारियां अपने अपने ढंग से कर रहे हैं। वो भी चाह रहे हैं कि इस 22 तारीख के कार्यक्रम को कैसे अपने अपने यहाँ सेलिब्रेट करें। उसके प्रकार अलग हो सकते हैं, विधि अलग हो सकती है ना, तरीका अलग हो सकता है, लेकिन संपूर्ण विश्व के जगती के लोग जो है मिल करके उस 22 तारीख के जो महायज्ञ के लिए अपनी अपनी आहुतियां सुनिश्चित करने में लगे हुए हैं और अपने अपने ढंग से तैयारी कर रहे हैं। देखिए, कोई मंदिरों को सजा रहा है, तो कोई घरों को सजा रहा है, कोई अक्षत बांट रहा है, कोई निमंत्रण बांट रहा है, कोई विदेशों से लोगों के आने की व्यवस्था कर रहा है, तो कोई वहां पर जो लोग आने वाले हैं उनको रहने खाने पीने की व्यवस्था कर रहा है, उनको पूरा सत्कार मिले। अयोध्या की नगरी पूरी तरह से सज रही है। आप देखिए कि इसको वैश्विक स्तर पर जो है विश्व की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में विकसित किया जा रहा है। और तो और देखिए, ये जो आयोजन है 22 तारीख का, वास्तव में भारत की सांस्कृतिक स्वाधीनता का एक बहुत बड़ा महोत्सव होगा। और ये जो जिस तरह से तैयारियां हो रही हैं, भगवान राम सबके हैं, सब राम के हैं। हालांकि ठीक है, मैं मानता हूं इसके ऊपर राजनीति भी शुरू से होती रही है, लेकिन वो राजनीति के बावजूद भी राम राम है, राम सेवक है, और राजनीतिक लोग राजनीतिक हैं। लेकिन हाँ, ये है कि कुछ लोगों को अपॉर्चुनिटी मिली थी, वो अपॉर्चुनिटी लोगों ने गंवा दी। कोई बात नहीं, वो आगे उनको शायद हो सकता है राम जी कुछ चांस देंगे,
मैं कहना चाहता हूं, देखिए कि ये जो भव्य दिव्य कार्यक्रम आयोजित हो रहा जी। है, हम उसके लिए देश भर के लगभग 10 करोड़ परिवारों के 60 करोड़ लोगों जी। तक पहुंच गए हैं। अभी 3 दिन और बाकी हैं। 1 तारीख से प्रारंभ हुआ वो अक्षत निमंत्रण अभियान 15 तारीख को पूरा हो जाएगा। 15 दिन के अंदर हम जो 60 करोड़ लोगों तक जाकर के अक्षत निमंत्रण बांट रहे हैं, और अयोध्या के लिए हम जो 7-8 हजार लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं, वो अपने आप में एक अभूतपूर्व होगा, जिसे कहते हैं न भूतो न भविष्यति। न भूतो न इस तरह का भविष्यतो कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। बिल्कुल। विनोद जी, मैं आपके पास आऊंगा। आपने बहुत इंटरेस्टिंगली बोला कि भगवान राम ने उन्हें भी मौका दिया था और वो उस मौके को खो गए, और हो सकता हो शायद आगे भगवान राम उन्हें मौका दें। I'll slip into a short break, but after the break I'll come to you, Mr. Deshratan Nigam, to analyze the politics which is surrounding the consecration of Lord Ram in Ayodhya. Ram's Ayodhya rebuilt. Ram Lala's Pran Pratishtha. Countdown to January 22nd. Dateline Ayodhya. Catch the mega coverage only on News 9 Live. Okay, welcome back. Mr. Nigam, it's 11 days to Pran Pratishtha in Ayodhya, but a lot of political controversy has erupted over the Congress declining, respectfully declining the invitation which was given to them to attend the Pran Pratishtha. Do you think that it is going to impact Congress in the 2024 election, or you think that the damage has already been done? Rajesh ji, let me give you a coincidence. The first litigation of Ram Mandir was filed in year 1885. That was the year when the Congress was born. It is a coincidence that the Congress has refused to attend, rather boycotted the Pran Pratishtha of the Vigraha of Ram Lala today. And they are trying to avoid it at all costs, despite the fact that they become Chunavi Hindu whenever the elections are there. So it actually exposes the hypocrisy. Everyone was invited, irrespective of which ideology or political party you follow. And these invitations are actually from the Ram Mandir Trust. It is the Ram Mandir Trust which has been entrusted to build this temple as per the Supreme Court order. So instead of playing politics, instead of, before the elections, you tell your go to the people, which I have not been able to understand till today, and you start visiting temples. But when the once in a lifetime opportunity is there to attend the Pran Pratishtha of the Vigraha of Ram Lala, then you boycott it just because you think some Muslim votes will go here and there. They will not vote for you. This is not how the politics is done. But there is a chain of events out here. They were the ones who called Ram imaginary. They wanted to destroy Ram Setu. They are the ones who coined saffron terror. They were the ones who opposed the construction of the Somnath Mandir, prevented Dr. Rajendra Prasad to attend that ceremony, but he still did, for which he was penalized. He was not even allowed to stay in Delhi. He stayed in a small room in the Congress headquarters in Patna and died of very poor health. So this is the conduct of the oldest party in India. Yes, they have to understand the opposition when they had that India Alliance meeting, and immediately after that meeting in Mumbai, they started abusing Sanatan Dharma. So the pattern was very clear. So I'm not surprised that they are boycotting the Pran Pratishtha ceremony. So the people are watching, clearly watching, and I'm sure in the elections, you will see its consequences. They were so honorably, respectfully invited. When the Sonia Gandhi ji writes a letter to Pope, heralding the canonization of Mother Teresa, always, holding the iftar party. So what kind of, secularism are they talking about? It is a sham secularism, Congress is. Deshratan ji, but there is Kartikeya, but there is also another aspect, and I would like you to speak on that. And that aspect is that if you look at what the Prime Minister has been doing, he does not refrain from exhibiting his belief, which is both cultural and religious.
If you recall, before 2009, he went to Kedarnath. Though people might say anything about Yam Niyam, it is part of the Ashtang Yoga, and it is culturally, or I would say, in terms of society and our heritage, something very unique to us. It's civilizational to us. So when Prime Minister publicly does that, though the critic says it's like a saintly hero, but the fact of the matter is that the Prime Minister is imbibing what is civilizational. Doesn't it reflect the departure from the past, the break in our politics, something very new for the Prime Minister to do this, publicly saying that he's a changed person? It's like spiritual purification, which previously many Prime Minister would even refrain from saying that. Kartikeya, let me tell you, what Prime Minister Modi is doing today should have been done immediately after we got independence from 1947. That sham secularism, and the word of secular was introduced in 1975 through a back door, kind of a back door in 1975. Preponderance of all logic and possibilities clearly show that our constitution was inclined towards Sanatan Dharma. And therefore, you see Bhagwan Ram and Sita's, painting in the constitution, original constitution, or Bhagwan Krishna giving Updesh to Arjun. So this was the inclination. This was the inclination of our constitution. But in conduct, there was no secularism, but only appeasement. What our Prime Minister Modi ji has done is to show, and you rightly use the word civilization, ये भारतीय सभ्यता की पहचान है और उसकी निरंतरता की भी पहचान है. This is about Indian civilization, its continuity. It is not about religion. Please understand, you have to have a difference between religion and dharma or panth. Dharma means your set of duties and responsibilities which change from your relationship with a person and also towards the society and nation at large. Perfect. This is what Sanatan civilizational value is. It's not also about that. So I would even go on further. Like I think previously when I had a conversation with Mr. Verma, there is a difference between secularism and panth nirpekshata. And there is nothing wrong in imbibing your civilizational, social and religious values. If you look at United Kingdom, and if you look at the way the ceremony for the Prince Charles took place, it was filled with the Christian symbols. Everything was Protestant about it. There was nothing even Catholic about it. So there is nothing wrong for the Prime Minister to embrace what Bharat stands for, and you can still be panth nirpeksh. Nailed it. Absolutely nailed it. Dharma nirpeksh. Hindu, thy name is secular. Please understand that. We are the ones who tell the world and believe in that you have your own mode of worship. Please follow. Aapka panth hai, continue following that. Panth nirpeksh you could be, but dharma nirpeksh means set of duties and responsibilities towards your family, towards your society, towards your nation, and the dharma and duty of your defense forces. We support our defense forces in every situation, our law and order machinery, so many things I can point out. So a Prime Minister can still be a panth nirpeksh and can still be a part of a ceremony which is civilizational, Sanatan in its nature, and which is a beacon of hope for the world. People are today looking at India as the only ray of hope. The World Bank says so, the IMF says so. It is because of our inclusive Sanatan values, not because we are trying to oust somebody from their mode of worship or from the development that we are having. So in India, if you look at it, development and dharma are going hand in hand. In fact, dharma should infuse development, dharma should infuse politics, so it becomes pure, it becomes imandar. So that is what the meaning of dharma is, and the leftist and so-called people who are trying to equate dharma, Sanatan Dharma with panth, they have to change. They have to understand that Bharat is different. It has its own set of values, and which the world today is recognizing. No wonder if you are having temple in Dubai and Abu Dhabi, because they are unifying forces. They are integral forces, full of integrity. So Ram Mandir will also be a symbol of social harmony, national unity and integrity as well.
where everybody, in fact, from other panth also have been invited. So this is the Prime Minister's sole motive to make India a Vishwaguru, and construction of Ram Mandir. And let me tell you, a mandir comes into existence once a Pran Pratishtha takes place, neither before nor afterwards. We have seen large number of temples in India which after Pran Pratishtha are still continuing to be built, which one example is Chhatarpur of Delhi, Chhatarpur temple of Delhi. So different kind of interpretations are being taken out here, but one must not lose focus of the fact that it is our civilizational aspiration, it is a representation of our civilizational continuity, and for which we stand for. That is what Prime Minister's entire focus is, and his Yam and Niyam, which he is following, the strict 11-day regimen, which is there to, have a very peaceful, clear, pure mind and body, to be a part of one of the most sacred ceremony of our lifetime. Mr. Nigam, this is also about, you taking a position. It's time for a short break. I'll come back to it and I'll go to Mr. Verma. 25 years ago, this would have been called hocus pocus, something mythological or something old. But the fact is that Sanatan Dharma is a living tradition. It's a lived tradition. And I think when Prime Minister asserts this, he asserts the primacy of Sanatan in context of Bharat. Mr. Verma, this question will be for you, but after a short break. Yes, the scale of the attack surprised us. When you get a series of alerts, 16 intelligence alerts, if Maharashtra government at that time had alerted the Coast Guard and the Navy, this 2611 would not have happened at all. And one of the details they had planned was to use these dhagas to mislead the investigative agencies. All this was to be presented as a Hindu terror. So it was a Pakistan operation. The LET was the front end. As the attacks were on, it was clear that they were planned and launched from Pakistani territory. For all of those victims of terror that was exported from Pakistan over the years, including but not limited to 2611. This and more, streaming on world's first news OTT, News 9 Plus. Download now. वर्ष 2070 तक भारत नेट जीरो का लक्ष्य हासिल करेगा. There is certainly a wall of capital coming into the clean tech, climate tech space, not just in India but across the world. This and more, streaming on world's first news OTT, News 9 Plus. Download now. Why is the state not looking at putting an embargo on that? And the state has not been able to handle that part of its own responsibilities. It's not the fiefdom of politicians. They owe it to the people. Everybody is as good a citizen as we. As a Telangana person, I will not accept his leadership. What was worrying was the stories that were coming from the Congress that there was internal sabotage. You can't straight away give 12%. There is no provision. Exactly. You need to do a lot of other things. Yeah, just because they are tribal, everyone does it. Wait. That's my problem. How do ordinary folks deal with this? Think about it.
Thank you so much. And we are in the middle of a show, and we are joined by Anil K. Verma, political analyst, Kartik Chopra, spokesperson, Nimoya Kara, Vinod Bansal, national spokesperson, VHP in Desh, Ratan Nigam, political analyst. But before I go to my guest and take you through the other nuances of the discussion we are having, how Prime Minister has set the tone with the announcement today, let me play out a couple of political reactions that have come in. हम बड़े भाग्यशाली हैं कि 500 वर्षों की कठिन कठोर साधना के बाद धैर्यपूर्वक सब कुछ सहते हुए बलिदानियों की बलिदान, आस्थावानों की आस्था और संविधान सम्मत समाधान, इन सब के फलस्वरूप हम इस पल के साक्षी होने जा रहे हैं। आज इस पल के लिए भारत के ऊर्जावान यशस्वी तपस्वी प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि वे 11 दिन के अनुष्ठान के लिए उतर रहे हैं। मुझे लगता है जब भारत के प्रधानमंत्री जी कर सकते हैं तो व्हाई नॉट, लेट अस टुगेदर। मैं तो आज अमेरिका में देख रहा हूं कितना उत्साह है और अमेरिका की धरती में कितने शहरों में आज सब जगह लोग भगवान के राम मंदिर की प्रतीक्षा कर रहे हैं। आइए हम सब मिलकर भी 11 दिनों के लिए स्वयं को समर्पित करें और हमारे देश का सौभाग्य है कि हमारे देश के पास ऐसे प्रधानमंत्री जी हैं। आइए, एक तरफ राम मंदिर और एक तरफ राष्ट्र मंदिर। भारत माता की जय। भारत की कालजयी सनातन मृत्युंजयी संस्कृति के उच्चतम प्रतिमान हैं प्रभु श्री राम, और उनके भव्य मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के लिए भारत के लोकप्रिय अत्यंत आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के द्वारा एकादश दिवसीय अनुष्ठान आज से आरंभ हो रहा है। वे एक अद्भुत शासक प्रशासक तो हैं, पर एक विलक्षण उपासक भी है। माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो अनुष्ठान आज से आरंभ हो रहा है, उसी से प्रेरणा लेकर सनातन जगत में भी अनेक अनुष्ठान आरंभ हो रहे हैं। मंदिरों में, मठों में, तीर्थ तटों पर और सभी जगह हम सभी यति, तपस्वी, सन्यासी और अनेक संत महात्मा धर्माचार्य अनुष्ठान आरंभ कर रहे हैं। मैं आप सबसे भी ये प्रार्थना करना चाहूँगा कि भगवान के मंदिर की निर्विघ्न प्राण प्रतिष्ठा के लिए हम सब नियम, व्रत, उपवास आज से आरंभ करें। यहाँ के मुख्य यजमान हैं, इसमें पूजा पाठ और अनुष्ठान और व्रत रहना ही बहुत जरूरी होता है यजमान के लिए, और वो सारी नियम को जानते हैं, इसलिए प्रधानमंत्री व्रत कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है, बहुत वंदनीय है हमारे प्रधानमंत्री जी का, किस प्रकार से रामलला के प्रति समर्पित हैं, यह उनकी इसी व्रत से ही पता चलता है। बहुत महत्वपूर्ण आध्यात्मिक चिंतन आदरणीय प्रधानमंत्री ने प्रस्तुत की। उनके हृदय में उज्ज्वलित राम जी की भक्ति अतुल्य कहा जा सकता है, और अपने आप को जिस तरह उन्होंने एक साधारण मनुष्य के तुल्य बताए, ये बहुत बड़ी बात है और एक योगी या भक्त ही कर सकते हैं। मेरी प्रार्थना है, मैं प्रार्थना करता हूँ कि हर एक भारतीय आज से 22 को जब राम जी की प्राण प्रतिष्ठा होगी तब तक धार्मिक अनुष्ठान करें और इस राम जी की मंदिर स्थापन के प्रति सर्वे भवन्तु सुखिनः का मंत्र सारा संसार में फैले। You know, on a lighter note, Mr. Verma, am I audible to you? Yes. You know, it's like comparing a pure Coke with multiple brands of light diet Cokes. You know, PM has just completely set the tone. You know, you can do whatever, but you can't do this. You know, you can't come, you know, anywhere close to him, because you know the combination of his conviction in politics is so strong that, you know, it's impossible. You know, people can visit the temple after the ceremony accusing it of being, you know, BJP run or whatever it is. But I think with this, they just can't come close. You know, you had to give it to him. True, Kartikeya, there are certain very interesting things which I think need some kind of repetition. Yam are those, you know, laws which tell you what not to do. And niyams are those laws which tell you what to do. So the Prime Minister has set tone for himself that what he will not do and what he will do. This is one thing which should be very clear to us.
besides the Ashtanga Yoga thing, where you have asana, pranayama, pratyahara, dharana, dhyan, samadhi, along with Yam and Niyam. So this is one thing. And when you are doing this practice, Yam and Niyam, then the dharma comes into picture. And let us remember what our Shastras have said about dharma. And I am reading a shlok, and I will explain a little bit about it. That in Indian context, our Shastras says, Dhriti Kshama Damo Asteyam Shaucham Indriya Nigraha Dhi Vidya Satyam Makroda Dashkam Dharma Lakshanam, meaning thereby that there are 10 cardinal values, which are Dhriti, adhere, Kshama, we all know, Dhamma means self-control, Asteya, we all know, non-stealing, Shaucham, Shuchita, honesty and purity, Indriya Nigrah, we all know, control over our senses, Dhi means our mind, and Vidya means, we all know, education, Satya and Akro. So these are the 10 cardinal values which you have to practice, which you have to do when you say, I am doing Yam and Niyam, and you will not go against it. So this is just for our viewers who would be a little, puzzled why the Prime Minister said he will do Yam and Niyam. This is one thing. The second thing, which is very important, is that when the Prime Minister had said this thing, many people will say that it is setting tone for Hindutva politics and all. Might be, I don't know, I don't dispute it. But at the same time, let me remind you that here is a Prime Minister who is not only following a Hindutva politics, but he is amalgamating at least 4 things. One is he is having governance on the agenda. Second, he is having the development on the agenda. Third, he is having the inclusion on the agenda. And fourth, of course, is the revival of our ancient tradition and culture and civilization and all that, which many people say in the form of this Pran Pratishtha ceremony. Today, he was in Bombay, inaugurating the longest bridge in Mumbai, connecting Mumbai with Navi Mumbai. So he is not neglecting any of these components. All the components are going parallel and parallel. I think that's many people say, why he is doing, that's very beautifully put, That's very beautifully put. Mr. Verma, what you just said, what does it bring me to? मैं इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि मैं केवल प्रधानमंत्री हूं. मैं इसलिए भी कर रहा हूं क्योंकि मैं उसके लिए तप कर रहा हूं. As an individual, I am trying to do my best to come to a position to partake in that ceremony. I think this act, individual act, says this. Yeah. Correct? So he's not just behaving like a prime minister, but he is behaving like an individual also. Absolutely. Absolutely. How an individual should be behaving when you are invited to be the main person in that Pran Pratishtha ceremony, be the judgeman of that. That's an excellent example before the nation. That like Ram Rajya, you see, Gandhiji always used the term Ram Rajya. We never, has any objection to Gandhi's Ram Rajya. Now, when Ram Rajya or Ram's Pran Pratishtha is being done in a country which is absolutely secular by temperament, by heart, by religiosity, by plurality, by diversity, by heterogeneity, by any standard. No, absolutely, you're absolutely right. You're absolutely right. Mr. Bansal, आप मेरे साथ हैं अभी, विनोद जी? जी. जब सोमनाथ का मंदिर बना था तब विपक्ष को कुछ समस्या नहीं हुई थी, अब क्यों समस्या हो गई? सोमनाथ जब बना था तब तो सारे लोग थे, उसमें उप प्रधानमंत्री भी थे, हमारे राष्ट्रपति भी थे, सब लोग थे, तब तो विपक्ष ने नहीं बोला कि हम इसको बॉयकॉट कर देंगे. कार्तिकेय जी, मुझे लगता है कि इस समय टाइम जो है वो हर्ष उल्लास और सेलिब्रेशन का है. ये जो राजनीति करने का टाइम बहुत निकल चुका पीछे. अब ये जो जिस तरह से लोग राजनीति कर रहे हैं वो अपने आप को सेल्फ एक्सपोज कर रहे हैं, सेल्फ गोल खेल रहे हैं. मैं कहता हूं ये वो देश के प्रधानमंत्री हैं, पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने जो नियम सेट किए वो पहले स्वयं इंप्लीमेंट किए, उसके बाद कंट्रीमैन को इंस्पायर किया टू गेट देम इंप्लीमेंटेड. और नॉट ओनली द कंट्रीमैन, ही हैज इंस्पायर्ड द वर्ल्ड एट लार्ज. आप देखिए योग के बारे में पहले ये स्वयं योग करते हैं, देखा, पहले भारत में दिखाया, योग दिवस मनाया और फिर उसके बाद योग को पूरे वर्ल्ड ओवर बना दिया.
अब देखिए कि ये जो राम जी का मंदिर बन रहा है, ऐसे ऐसे अनेक स्वच्छता अभियान की बात कर लो, बंसल जी, और मैं भी तो कई दूसरी अभियान चीज उन्होंने सोच रहा हूं। आई थिंक इसकी जो सबसे बड़ा मैसेज है, पीपल आर नॉट गेटिंग इट। व्हाट प्राइम मिनिस्टर इज ट्राइंग टू टेल द पीपल इज दैट दिस इज नॉट अ, यू हैव नॉट कम हियर टू वॉच सम सॉर्ट ऑफ अ फुटबॉल मैच। आपको एक स्टेट ऑफ माइंड में आना है, आपको स्टेट ऑफ माइंड में जिसमें तप की जरूरत होती है, जिसमें योग की जरूरत होती है। कार्तिक चोपड़ा जी, अगर आप मेरी बात सुन पा रहे हैं, आपको वो तपस्या करके आनी है। आप कोई मैच देखने नहीं आ रहे हैं, आप कोई पार्टी के लिए नहीं आ रहे हैं कि आप आएंगे वहां ताली बजाएंगे, एक बड़े टेंट पे रहेंगे, नहीं। इट्स एन एक्सरसाइज इन सेल्फ प्यूरिफिकेशन। आई थिंक इट्स अ मैसेज which I think is being lost on a lot of people. Mr. Chopra. You see, all this politics that is being played over this holy ceremony is absolute nonsense and totally unrequired. A prime minister is the leader of our nation. As in ancient times, you had a king who led a kingdom. Today, he is somebody who is a devout Hindu, Sanatani. What is he supposed to do? Is he supposed to hide his faith? Is he supposed to hide his religious identity just to appease a certain section of people? Absolute nonsense. Why should we as Hindus in our homeland be ashamed, be literally religious refugees in our own country? The opposition needs to stop this kind of nonsense. Nirmohi Akhada fought for over almost 500 years to liberate the holy site. It pained us and hurt us very badly when invitations were extended to the communists, to the Congress, to so many people who had absolutely nothing to do with this, with the liberation movement. Instead, did everything to harass us, stop us from fighting our cases right through the years. Please remember, the current government has been here for 10 years and in between for some years before that. But there were decades when there was no pro-Sanatani government in this country. We suffered through all those years. Yet invitations were extended to people who snubbed those invitations. They should have never been called. We find today you are inviting actors, cricketers. Excellent. Please go ahead, invite them. They're all great in their own right. But for God's sake, invite a lot of those people who were critical in the movement. Our lawyers who have fought for 3 generations have not been called to the Pran Pratishtha ceremony. Doesn't matter. We still say, fine, the temple is coming, great. But our humble request is that the ancient idols for whom we fought for centuries, which are Virajman in the mandir right next to the new mandir, please make them Virajman in the holy Garbhagriha along with the new Vigraha that is being, for which the Pran Pratishtha Puja is being done. Because these are the ancient idols which, as per Supreme Court judgment, were awarded title of this location. We must not break continuity from the past as we head to a glorious future. And for God's sake, we want all politics to end on this. This is the greatest turning point for our civilization. And it's time everybody understood this. Why do we have to appease any section just so that for votes? Lord Ram is way above votes, way above everything. And all this accusation that this is being done for elections, for this, that is all nonsense. The completion date of this temple was announced 3 years ago. 3 years ago, it was said that by the end of this year, by end of 2023, early 2024, the inauguration will be done. And as Deshratan Nigamji said, a temple construction is a continuous process. Like the Chhatarpur Mandir in Delhi, there are hundreds of other examples where temples keep growing. But stop the politics on this. Please, let this be a holy ceremony. Okay. Let this be a ceremony that is revered. Let those who have fought for generations for the liberation of the holy site be present at the Pran Pratishtha ceremony. आपका एक सवाल है कार्तिक, यू नो, आई थिंक आई वुड लाइक टू टेक दैट टू बंसल जी। बंसल जी, कई सारे संप्रदाय हैं, कई सारे वो लोग हैं जो जुड़े हुए थे मंदिर के अभियान से। उन लोगों के मत हैं, उन लोगों को साथ लेके कैसे आप आगे बढ़ रहे हैं? क्योंकि संघ का तो कहना है कि समाज को संगठित करना है और कोई पीछे नहीं छोड़ा जाएगा, लेके चलेंगे सबको साथ। तो कई सारी इस तरह की जो बातें आ रही हैं, उसको आप कैसे 22 तारीख से पहले संजोने की कोशिश कर रहे हैं? भाई, सब लोग जुड़े तो हुए थे। नहीं, कार्तिक जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, देश के 4000 से अधिक पूज्य संत इस महान कार्यक्रम में हिस्सा बनने वाले हैं। और आप सोचते हैं कि भी उसमें निर्मोही अखाड़ा छूट जाएगा? कैसे कोई कल्पना कर सकता है? हाँ, हो सकता है कार्तिक चोपड़ा जी को इन्विटेशन ना हो, मुझे नहीं पता एक्चुअली, चूंकि डिटेल नाम मैंने नहीं पढ़े। मैं तो विनोद बंसल भी नहीं जा रहा उसमें, मैं आपको बता दूं।
लेकिन मैं कहना चाहता हूं, देखिए जाना न जाना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है कि राम का काम पूरे वर्ल्ड के अंदर, ग्लोब के अंदर जा रहा है। राम की जो शिक्षा है कार्तिक जी, वो आपका जो सपना है वो पूरा कर रही है। आप देखो राम का ये जो ग्लोरियस सेरेमनी है विच इज स्प्रेडिंग द मैसेज टुवर्ड्स द वर्ल्ड, और ये जो ग्लोब का एक महानतम कार्यक्रम जो बनने जा रहा है, उसके पीछे आपको खुश होना चाहिए। इससे क्या फर्क पड़ना है कि आपको इन्विटेशन मिला कि नहीं मिला। लेकिन हाँ, ये मैं कह सकता हूं, ऐसा नहीं हो सकता कि निर्मोही अखाड़े के किसी संत को न बुलाया हो। इट इज क्वाइट इम्पॉसिबल। मैं कह सकता हूं, देखिए फिर हम अगर मान लो उन्हीं को नहीं मिला तो हम कैसे कह सकते हैं कि ये राम जी का काम है। आप देखिए, हम तो ये जो कार्यक्रम है, ये तो विश्व के प्रत्येक मतपंथ, संप्रदाय, भाषा, विचार और क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाला कार्यक्रम है। वैश्विक स्तर पर अगर देखें तो 50 से अधिक कंट्रीज के 100 से अधिक डेलीगेट्स आ रहे हैं इसमें। आप देखिए 100 से अधिक देशों के अंदर ये बड़ा ग्रांड सेलिब्रेशन की तैयारी हो रही है। विश्व का ऐसा कौन सा कोना है जहां पर के राम जन्मभूमि का ये 22 तारीख का जो महोत्सव है वो सेलिब्रेट नहीं होगा। तो ये सोचना, ये छोटी छोटी बातें बहुत मतलब पीड़ा देती हैं कि भाई मेरे को इनविटेशन नहीं मिला तो मैं उसमें कमियां निकालूंगा। ये तो राजनीतिक लोगों का काम है। कम से कम हमारे जो अपने लोग हैं उनको इस बारे में बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। और देखिए राम जी का काम है, राम जी ने करवाया था, आप भी उसके सहयोगी बने, इसके लिए आपको साधुवाद। और राम जी आपके ऊपर कृपा करेंगे, डेफिनेटली करेंगे। और जो बात आपने कही है वो अपने ट्रस्ट तक भी पहुंचेगी, वो सब बातें उस पर ध्यान देंगी। अगर कोई त्रुटियां हो रही हैं तो आप लिखिए ना ट्रस्ट को, कोई दिक्कत थोड़ी है, घर के लोग हैं। निर्मोही अखाड़ा कोई बगल नहीं है, दूर नहीं है। निर्मोही अखाड़ा बिल्कुल अपने अयोध्या में ही तो है, तो चंपा जी से मिल सकते हैं। लेकिन मैं कह रहा हूँ इसकी आवश्यकता है नहीं, मुझे लग रहा है। देखिए प्रश्न ये है कि सबके राम और राम सबके हैं और सब राम के हैं, यही तो मैसेज पूरे वर्ल्ड को देना है। और ये सिर्फ राम मंदिर नहीं बन रहा जी, ये तो राष्ट्र मंदिर बन रहा है। राष्ट्र मंदिर तभी कहेंगे जबकि हर सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी का उसमें रिप्रेजेंटेशन होगा। और एक देखिए अंत में बता दूं आपको, प्रधानमंत्री जो है ना, अभी जो जिस तरह की जो आदर्श सेट कर रहे हैं, ये विश्व भर के लिए एक बहुत बड़ा एक अचीवमेंट होगा और वो फॉलोइंग जबरदस्त होगी। लेकिन हाँ, ये देखिए अभी 10 दिन शेष हैं कार्तिक जी, 10 दिन शेष हैं इस कार्यक्रम में, तो अनेक दशानन भी सामने मुंह आए खड़े हुए हैं। ये राम भक्तों को इस बात को चिंता करनी पड़ेगी कि इन छोटी छोटी चीजों के लिए हम आपस में न उलझें और उन दशाननों को समझ करके वो कोई विघ्न न पैदा कर लें। जैसे त्रेता युग में जब यज्ञ होते थे तो वो राक्षस किस तरह के विघ्न पैदा करते थे, ऐसे दशानन भी देश के अंदर बढ़ रहे हैं। 10 दिन के अंदर बहुत सारी ऐसी घटनाएं सामने आएंगी, हमें उनसे सावधान रहने की आवश्यकता है। I think at the end of it all I can say, because this program was about the Prime Minister Modi, तो मैं तो इतना ही कहूँगा कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो खुद अपना पर्सनल एग्जाम्पल रखा है कि वो केवल उसका उद्घाटन इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि सिर्फ वो प्रधानमंत्री हैं। He will walk up those steps to be at a position to do this, perform that puja ceremony of प्राण प्रतिष्ठान। वो खुद अपने आप को उस लेवल पे ला रहे हैं। एक तो होता है कि आप चुनाव जीत के वहां पहुंचे हैं, लेकिन जो स्पिरिचुअल है, जो जिसे हम अंग्रेजी में पेरेंट्स बोलते हैं, हिंदी में तप बोलते हैं, जिसे हम प्योरिफिकेशन भी कह सकते हैं अंग्रेजी में, या उसको ये कह सकते हैं कि अपना, जिसे कह सकते हैं कि आप अपने जो जीवन की जो भावना है उसे to bring the cleaner aspect of it when you are in front of an idol, the deity, and then you become part of the program is worth emulating, and I have no qualm in saying that. And before I end this program on point, I would like you to listen to what the Prime Minister of Bharat, Narendra Modi, had to say. साथियों, मेरा ये सौभाग्य है कि 11 दिन के अपने अनुष्ठान का आरंभ मैं नासिक धाम पंचवटी से कर रहा हूं। पंचवटी वो पावन धरा है जहां प्रभु श्री राम ने काफी समय बिताया था, और आज मेरे लिए एक सुखद संयोग ये भी है कि आज स्वामी विवेकानंद जी की जन्म जयंती है। ये स्वामी विवेकानंद जी तो थे जिन्होंने हजारों वर्षों से आक्रांतित भारत की आत्मा को झकझोरा था। आज वही आत्मविश्वास भव्य राम मंदिर के रूप में हमारी पहचान बनकर सबके सामने है। और सोने पर सुहागा देखिए, आज माता जीजाबाई जी की जन्म जयंती है। माता जीजाबाई जिन्होंने
छत्रपति शिवाजी महाराज के रूप में एक महामानव को जन्म दिया था। आज हम अपने भारत को जिस अक्षुण्ण रूप में देख रहे हैं, इसमें माता जिजाबाई जी का बहुत बड़ा योगदान है। और साथियों, जब मैं माता जिजाबाई का पुण्य स्मरण कर रहा हूँ तो सहज रूप से मुझे अपनी माँ की याद आना बहुत स्वाभाविक है। मेरी माँ जीवन के अंत तक माला जपते हुए सीताराम का ही नाम भजा करती थी। साथियों, प्राण प्रतिष्ठा की मंगल घड़ी, चराचर सृष्टि का वो चैतन्य पल, आध्यात्मिक अनुभूति का वो अवसर, गर्भगृह में उस पल क्या कुछ नहीं होगा। साथियों, शरीर के रूप में तो मैं उस पवित्र पल का साक्षी बनूंगा ही, लेकिन मेरे मन में, मेरे हृदय के हर स्पंदन में 140 करोड़ भारतीय मेरे साथ होंगे। आप मेरे साथ होंगे, हर राम भक्त मेरे साथ होगा, और वो चैतन्य पल हम सबकी सांझी अनुभूति होगी। मैं अपने साथ राम मंदिर के लिए अपने जीवन को समर्पित करने वाले अनगिनत व्यक्तित्वों की प्रेरणा लेकर जाऊंगा। त्याग तपस्या की वो मूर्तियां, 500 साल का धैर्य, दीर्घ धैर्य का वो काल, अनगिनत त्याग और तपस्या की घटनाएं, दानियों की, बलिदानियों की गाथाएं, कितने ही लोग हैं जिनके नाम तक कोई नहीं जानता, लेकिन जिनके जीवन का एकमात्र ध्येय रहा है भव्य राम मंदिर का निर्माण। ऐसे असंख्य लोगों की स्मृतियां मेरे साथ होगी। जब 140 करोड़ देशवासी उस पल में मन से मेरे साथ जुड़ जाएंगे, और जब मैं आपकी ऊर्जा को साथ लेकर गर्भगृह में प्रवेश करूंगा, तो मुझे भी एहसास होगा कि मैं अकेला नहीं, आप सब भी मेरे साथ हैं। साथियों, ये 11 दिन व्यक्तिगत रूप से मेरे यम नियम तो है ही, लेकिन मेरे भाव विश्व में आप सब समाहित है। मेरी प्रार्थना है कि आप भी मन से मेरे साथ जुड़े रहें। रामलला के चरणों में मैं आपके भावों को भी उसी भाव से अर्पित करूंगा जो भाव मेरे भीतर उमड़ रहे हैं। साथियों, हम सब इस सत्य को जानते हैं कि ईश्वर निराकार है, लेकिन ईश्वर साकार रूप में भी हमारी आध्यात्मिक यात्रा को बल देते हैं। जनता जनार्दन में ईश्वर का रूप होता है, ये मैंने साक्षात देखा है, महसूस किया है। लेकिन जब ईश्वर रूपी वही जनता शब्दों में अपनी भावनाएं प्रकट करती है, आशीर्वाद देती है, तो मुझ में भी नई ऊर्जा का संचार होता है। आज मुझे आपके आशीर्वाद की आवश्यकता है। The scale of the attack was something that we were